Hello students, so today the subject that we are going to deal is management concepts and organizational behavior, and I, Dr. Priyaraj Butolia, working as an assistant professor in Bora Institute of Management Sciences, Lucknow, will deal with the topic that is interpersonal relationship and Johari window. This is very important and interesting topic in our personal life too. So students, I kindly request you to focus on the factors of interpersonal relationship and Johari window. It is not only important in terms of organization, but it is also important in terms of your personal life. If you will focus on these two aspects, you will find that there is a lot many changes in your attitude, as well as you will achieve the success on a long term basis. So let's see, the topics to be covered for today's video are the introduction, the concept, definition, types, importance, ways to develop interpersonal skills, and lastly the Johari window. Let's see the introduction of interpersonal skills. It is rightly said that the art of communication is a language of leadership. जितने अच्छे लीडर आप होंगे उसका फाइनली इम्पैक्ट ये होगा कि आप कितने अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं या कन्विंस कर पाते हैं. तो फाइनली कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडर की क्वालिटी उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करती है. So that is about your interpersonal skills. Now let's see what are interpersonal skills. Interpersonal skills are also known as people skills, soft skills or emotional intelligence. These are related to the way you communicate and interact with others. Interpersonal skills को people skills भी बोला गया है, soft skills as well as emotional intelligence. Emotional intelligence is basically आप कितने emotionally strong हैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कितना ज़्यादा स्ट्रेस को कोप अप करते हैं, और अगर आप अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस या पर्सनल लेवल ऑफ कोई भी परेशानी आप अपने कलीग्स के साथ काम करते हुए ना निकालें, दैट इज़ मोर अबाउट योर इमोशनल इंटेलिजेंस. आप इमोशनली अपने आप को कितना स्टेबल रख सकते हैं इन एनी सिचुएशन, एंड दिस इज समवेयर अबाउट द इंटरपर्सनल स्किल्स. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस. ये बताता है कि कितने अच्छे से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कितने अच्छे से आप इंटरेक्ट करते हैं. एंड ऑब्वियसली जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, उतने ही अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे. टेक्निकल स्किल्स तो सबके पास अच्छे होते हैं. यू मे हैव अ ग्रेट कमांड ऑन योर टेक्निकल स्किल्स, बट इफ अ पर्सन लैक्स interpersonal skills, he may not succeed. So in spite of focusing on technical skills, please do focus on your interpersonal skills too. Interpersonal skills are the behaviors or tactics a person uses to interact with others effectively. Interpersonal skills वो हैं जो आप एक दूसरे से बात करने में या interact करने में use करते हैं. In the business world, the term refers to the employee's ability to work well with others. Interpersonal skills somewhere helps you to gel with the other person, to interact with other person, and somewhere the ability to work with other people in a group. Interpersonal skills are often referred to as social intelligence. Social intelligence is आप social terms में कितने ज़्यादा और कितने अच्छे से एक दूसरे से connect हो सकते हैं. Students, this is not only important in organization, it is also important in your personal life too. Whenever you have a good interpersonal skills, you can excel in your relationship, you can excel in group dynamics, you can work very good in team. So you should need to sharpen your interpersonal skill always on a long term basis. You should also have friends जो आपको बताएं कि आप कौन से interpersonal skills में लैक करते हैं, आप कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं, और उसी गाइडेंस के ऊपर आप अपने interpersonal skills को improve कर सकते हैं. So this topic is very important on my part too. Now the concept of interpersonal skills. Interpersonal communication is the process of face-to-face exchange of thoughts, ideas, feelings, emotions between two or more people. In interpersonal skills, somewhere you need to have a face-to-face communication जहाँ पर आप अपने thoughts, ideas, feelings या emotions को share कर रहे हैं. अगर वो face-to-face interaction होगा तो interpersonal skills ज़्यादा easy हो जाते हैं. Like you can see
For example, when you have a chat with somebody on WhatsApp or Facebook, or when you have a text message with somebody, there are many chances of having a misunderstanding or conflict. But when you have a face to face interaction with somebody, एक्चुअली आप उसके एक्सप्रेशंस को जज कर सकते हैं, एक्चुअली उसके वर्ड्स और उसके बॉडी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है उसको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं. आप सोच सकते हैं कि वेदर उसके एक्सप्रेशंस और उसके वर्ड्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन इंटरपर्सनल स्किल्स. अगर मैसेजेस में या टेक्स्ट मैसेजेस में आपने देखा होगा, वर्ड से आप कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर फीलिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. इसलिए फेस टू फेस एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरपर्सनल स्किल्स. Interpersonal skills also involves both verbal and non-verbal elements. Verbal elements में कहीं ना कहीं आपके words हैं in the form of written, in the form of oral, whatever you use in terms of communication. Non-verbal में आपकी body language, आपका voice modulation, आपका tone कैसा है, आप किस तरीके से interact करते हैं, आपके facial expressions कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उतनी ही important होती है. सो इंटरैक्शन में वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल ये दोनों ही एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आई फाइंड नॉन वर्बल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जितने अच्छे से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप अपनी चीज़ों को सामने रख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ योर वॉइस मॉड्यूलेशन, उतने क्लियरली उस चीज़ का इम्पैक्ट सामने वाले पे होगा. सो वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ अ रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट, it results in productive work. And finally, जितने अच्छे आपके relationships होंगे उतना ही productively आप organization के लिए काम कर सकते हैं. At employee level, if trust and passion for work exist, the unity between them can achieve great results. If you have good interpersonal skills, तो employees में trust होगा, passion होगा, कहीं ना कहीं वो मिलजुल के कुछ miracles करेंगे, कुछ good results लेके आएंगे organization के लिए. इसलिए interpersonal skills are very important. Let's see the definition of interpersonal skills. Interpersonal communication is a process of exchange of information, ideas, feelings between two or more people through verbal or non-verbal methods. Generally, interpersonal skill is about a communication जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ और अपनी फीलिंग्स किसी भी सेकेंड पर्सन से या टू या मोर पर्सन से शेयर कर रहे हैं. एंड उसमें वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही हिस्सा होंगे. सेकेंडली, स्किल्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू डीलिंग सक्सेसफुली विथ अदर पीपल. ये एक ऐसा स्किल है जिसमें आप दूसरे पर्सन से सक्सेसफुली डील कर सकते हैं. This was regarding the definition of interpersonal skills. Now let's see some of the examples of interpersonal skills. The first is the emotional intelligence. As in the very introduction phase, we have discussed what is emotional intelligence, how emotionally stable one person is, how he reacts to a particular situation जहाँ पर बहुत पैनिक होना चाहिए था और जितने आराम से आप उस सिचुएशन को अगर डील कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड और विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड आउट, दैट इज़ ऑल अबाउट योर इमोशनल इंटेलिजेंस. कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस जहाँ पर अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस आप शेयर करते हैं. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरपर्सनल स्किल्स. जितने अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल. द मोर इन्फ्लुएंशियल योर पर्सनैलिटी इज़, द मोर यू कैन मोटिवेट द पीपल, द ग्रेट इज़ योर इंटरपर्सनल स्किल्स. पॉजिटिविटी. द पर्सन हु इज़ पॉजिटिव इन लाइफ, पॉजिटिव इन वर्क प्रोसेस, organization wants that person to be hired in the company. If you are positive towards your attitude, automatically you will generate an environment in which everybody wants to be with you. So positivity in life is very important. Openness to feedback. You should always be open to feedback. The people when sometimes criticize you, you should take it in a positive note. You should remember those points which whatever the person has suggested you, and you should take it as a feedback and work on the improvement of that parameters. जहाँ पर आप feedback लेते हैं and if you are open to that feedback, somewhere you try to change yourself, and that is very important.
if you take the criticism or feedback in a negative sense, the person is not liked by anybody, because every time the other person cannot appreciate you. You want some people around, they should somewhere point out your negative points, they should criticize you, they should give you feedback. This tries to improve your interpersonal skills. You should be empathy, you should have empathy towards other. You should have the feeling that कि अगर मेरी जगह पे, मैं उनकी जगह पर होता तो कैसे रिएक्ट करता या क्या सोच रहा होता. इट इज़ बेसिकली पुटिंग योर लेग इन अदर शूज़. आप अगर उस सिचुएशन में होते तो कैसे रिएक्ट करते. दिस इज़ बेसिकली एम्पैथी ऑल अबाउट. टीम वर्क, you should always try to work in a team. In team, coordination is required, good communication skills are required, and a good team work is a interpersonal skill. And the last example is the active listening. You should be an active listener. Whenever somebody is speaking something, you should have an open ear, or you should have a clear attention towards that speaker. You should switch off your mobile phones, laptops when somebody is saying something or telling you something. You should pay attention to whatever he or she wants to communicate. You can also have an interactive question answer session with that. This is actually your good interpersonal skills all about. There are two types of interpersonal skills. First is interpersonal cooperative behavior, and another is interpersonal conflicting behavior. Cooperative behavior says about having a mutual gratification between two people. यहाँ पर somewhere you feel or you share the feeling of satisfaction. If you are satisfied with the interaction with that person, you have a cooperative behavior. अगर आपको उससे बात करके कहीं ना कहीं satisfaction मिल रहा है, या if you feel your needs are gratified, you have a cooperative behavior. On the other hand, on the vice versa part, you can see that because of several reasons like personality differences, different value systems, interest conflict, role ambiguity, etc., conflict may arises. So on the other part, if you disagree with certain things on with somebody when you are interacting, it can be any reason. अगर आपको उनका एटीट्यूड पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस है, या फिर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, या आपके काम करने में या आपके रोल में अगर एम्बिग्विटी हो, तो ये भी रीजंस कहीं ना कहीं आपकी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर के रीजंस हो सकते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स, वन इज कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड द अदर इज कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स. अब इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर वन, डेवलप टीम डायनेमिक्स. कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स आपको इंटरेक्शन फोर्स स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं बिटवीन द टीम मेंबर्स. इट ऑल्सो स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन. कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल्स आपको टू वे कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. जिसमें यू कैन कम्युनिकेट योर मैसेज एज वेल एज यू कैन गेट द फीडबैक. It also enhances your employment opportunities because here you are very good at interpersonal skills. So people will try and hire you because you are a good leader, you are a good motivator, you have good communication skills. So employment opportunities will automatically enhance. It will pay path to success. अगर आपके interpersonal skills अच्छे होंगे तो long term में आप लोगों का attraction और लोगों का attention gain करके एक अच्छी team में काम करके आप एक success gain कर सकते हैं. It also helps in alignment of business goals. You can achieve your business objectives, your business goals. It also helps in change management. Change management में interpersonal skills ज़रूरी है, क्योंकि जब change introduce होता है आपको अपने employees को उसको एक positive note में communicate करना होता है जिससे वो resist ना करें. जितने अच्छे interpersonal skills होंगे उतना अच्छा change management होगा. Effective management and leadership. The person with good interpersonal skill will be a good leader because he is having the ability to influence somebody, to motivate somebody. Conflict management. Interpersonal skills, conflict management may be बहुत useful है. If the two people are having conflict, you can act as a mediator, you can talk to both of them, you can somewhere solve their problems and you can solve the misunderstanding between them. So having a good interpersonal skills can help you to be a good negotiator, a good conflict manager. And finally, it somewhere helps in the problem solving and decision making. Interpersonal skills आपको problem solving में भी help करते हैं, साथ ही decision making में. Because in problem solving or decision making, you need to have the group member suggestion.
And when you are good at a team, the people will come with you with particular suggestions and ideas, and you will solve a particular problem and come up with the best alternative to make a decision. So these are the points included in importance of interpersonal skills. How to improve your interpersonal skills? कैसे improve करें? अगर कोई कमी है, कोई problem है, तो how you can improve it? It can be improved, students, if you focus on these points. Number 1, be enthusiastic and engaged when interacting with people. आप जब किसी से भी बात करें तो बहुत खुश होकर और engage होकर बात करें. Be an active listener. जो भी कोई कुछ कह रहा है उसे properly सुने, उसे respond करें, instead of being in your own chats, being on your own mobile phones or laptops. You should pay attention to what the person is saying or speaking all about. Seek out opportunities to build relationship. आपको कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए रिलेशनशिप डेवलप करने में. अगर आप वो अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे लोगों से रिश्ते बनाने में या रिलेशनशिप डेवलप करने में, तो ऑटोमेटिकली आपको कंफर्ट लेवल मिलेगा एंड देन यू कैन इम्प्रूव, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन वट एवर ही और शी मे आस्क फॉर. Smile and have a positive body language. Always have a smile on your face. If you have a smile on your face, the person is attracted to your personality and somewhere or the other he or she wants to talk to you. And have a positive body language. Whenever you talk to somebody, please have a smile and give a positive body language in terms of nodding your head or somewhere reciprocating whatever he or she wants to say. पॉजिटिव बॉडी एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है जब आप बात करते हैं. वो कहीं ना कहीं आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करता है. एंड द पीपल एक्चुअली वांट्स टू टॉक टू अ पर्सन हु हैव अ स्माइलिंग फेस एंड अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. आस्क ट्रस्टेड फ्रेंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. कुछ ऐसे फ्रेंड्स आप आसपास रखिए जो आपको फीडबैक देते रहें. अगर आप में कोई इंटरपर्सनल स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है, आप में एंजाइटी प्रॉब्लम है या आप को किसी चीज़ से फियर है, तो डेवलप ट्राई एंड मेक अ ट्रस्टेड फ्रेंड ग्रुप जो आपको आपके जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपको सुधारने की कोशिश करें. और ऐसे क्रिटिसिज्म से ही आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसलिए हमेशा बोला है, यू शुड बी ओपन, यू शुड हैव एन ओपननेस टू फीडबैक. Whenever a person is giving you feedback, you should accept it on a humble note. Observe others' positive interpersonal interaction. This is a very good and a very easy point to do. अगर आप खुद interpersonal skills में lack करते हैं, so it's better you should need to observe somebody who is very good at interpersonal skills. And with the help of observing, somewhere you can learn कि वो ऐसी कौन सी चीज़ करता है जिससे आपको उसके interpersonal skills या personality attract करती है. Seek out mentorship. If you find some particular problem in your interpersonal skills, you can have a mentor and he or she may guide you in certain problems. Develop mutual expectations. Whenever you are working in a group, you need to have a certain sort of mutual expectations. आप कुछ expect करते हैं and if somebody has the same with you, in that sense you can improve your interpersonal skills. You should always appreciate others. Appreciating others create a positive environment. Whenever you try and appreciate others, the other person reacts and here you can develop your communication or your relationship in a strong way. So always you should try and appreciate other people. Practice active listening. You should be a good listener. Instead of speaking in between or distracting people whatever they are saying, you should hear to whatever they say. You need to pay attention to their words. You need to ask question and answers. You need to have an interactive session. And lastly, resolve conflict. Wherever there is a conflict, you can go and resolve those conflicts. If you have some interpersonal conflicts within you, like the fear of anxiety, at that point of time, even you can go for a mentorship or you can go with your friends for the best method how to solve that anxiety. So these are some of the ways how you can improve your interpersonal skills, and definitely this will help you a lot in your personal as well as professional life. Johari window. This is the last topic of this video. Johari window was devised by American psychologist Joseph Luft and Harry Ingham in 1955. They were doing research on group dynamics in University of California, Los Angeles. And Johari ये word basically Joseph and Harry इनसे मिला के Joseph का J-O and Harry का H-A-R-R-Y combines the word Johari. So on the basis of these two people,
the word came into picture, that is Johari. Johari window model is simple and useful tool for illustrating and improving self-awareness and mutual understanding between individuals within a group. जोहारी विंडो आपको कहीं ना कहीं एक सिंपल और यूजफुल टूल की तरह आपके खुद के सेल्फ अवेयरनेस, खुद के सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा एंड साथ ही साथ आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडिविजुअल, बिटवीन अ ग्रुप, वो भी इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा. सो जोहारी विंडो इज मोर अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दिस मॉडल कैन ऑल्सो be used to assess and improve a group's performance with other groups. This model is particularly useful for team development. So this model is very useful. अगर आप इसे समझेंगे तो somewhere you can improve your group performance or group development skills also. It is a part of interpersonal skills. So let's see what is Johari window all about. Now here we have two axes. One is x-axis and one is y-axis. On x-axis you have known to self and not known to self. On y-axis you have known to others and not known to others. On these parameters you can see the x-axis as well as the y-axis. Now you can see the first quadrant. First quadrant says about open area. This is the area in which the things are known to you as well as the things are known to others. Second is about the blind area. Blind area says that you do not know about it but others knows about it. दूसरों को उसके बारे में पता है ना, आपको उसके बारे में नहीं पता. Third is the hidden window. Hidden window says about known to self but not known to others. आपको उसके बारे में पता है but दूसरों को उसके बारे में नहीं पता. And last is the unknown, that is it is not known to you as well as it is not known to anybody. So these are the four quadrants or four windows in Johari. So let's discuss them in detail and one by one. First is the open phase. जैसे हमने बात की, first is about कि you know and I know. I also know the things and you also know the things. Here this quadrant represents the action and behavior or information that is known to the individual and those around them. This information is public and made available through communication and exchanges between the individual and others. In the open quadrant, as you can see in the previous diagram, this is the area which is known to you as well as to others. ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है, एक ऐसा फेज ऑफ पार्ट है आपकी लाइफ का जिसके बारे में आपको भी पता है, आपके जो आसपास लोग हैं उन्हें भी पता है. जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आप के घर में कितने लोग हैं, आपका एजुकेशन किस में हुआ है. Some of the factors are known to everyone and this is actually the open area. यहाँ पर the person is very straightforward. He is open sharing. यहाँ पर वो हर चीज़ आपसे share करेगा and he will try to explain everything in detail. He is very straightforward at that point of time. So this phase is good in parts of personality. Second is about the blind area. The blind area is all it says about कि it is not known to self but it is known to other. This is a dangerous part. यहाँ पर आपको अपने बारे में नहीं पता है but दूसरों को आपके बारे में पता है. I do not know but you know. So this is the area which is blind on your terms. Here the information in this area is particularly useful in 360 reviews for personal and professional development. Actions and behavior in the blind area are known to others but individual is not aware of it. In blind area somewhere आपने कुछ ऐसी चीज़ें कॉपी की होगी अनकॉन्शियसली अपने चाइल्डहुड से जिसके बारे में जो आपको ऑब्जर्व करता है उसे वो सारी चीज़ें नज़र आती है बट आपको अपने बारे में वो एरिया के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है. दिस इज़ ब्लाइंड फॉर यू but people who are around you they can tell you whatever your reaction is, whatever your body language is at a particular situation. So here you can work on the blind area. The third is the hidden one. As you can see in the diagram, the hidden one is about known to self but not known to others. यहाँ पर आपको पता है लेकिन आपके सामने जो है, आपके आसपास जो है उन्हें उसके बारे में नहीं पता. So that is the area where you can maintain some secret. यहाँ पर
लोग अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं, कुछ सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई नॉट टू क्लैरिफाई दोज थिंग्स टू अदर्स. This information is known to individual but not known to anyone else. This may consist of private information which the individual chooses to keep hidden. Feelings, ambitions, dreams, opinions may be withheld within the group by the individual out of fear of negative reaction. लोग उसे क्रिटिसाइज ना करें या पसंद ना करें, इसलिए कुछ लोग इस एरिया को अपने बिहेवियर में डेवलप करते हैं, जो सीक्रेट फॉर्म में उनके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, कोई फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, कोई एम्बिशन हो सकता है, या वो चाहते हैं कि जब ये चीज़ें कर लें तब लोगों को बताएं. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी में हिडन पार्ट में होते हैं. एंड लास्ट इज अबाउट अननोन. Unknown is a quadrant which is not known to you as well as it is not known to others. यहाँ पर आप भी नहीं जानते, you also do not know and I also do not know. This is the phase जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है एंड अपने हमारे पर्सनालिटी में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. The last window of information is referred to simply as unknown. This includes information, skills and behavior that are unknown to others as well as to the person itself. Last, the need of Johari window. Why there is a need of Johari window? First, to create a self awareness. आप क्या हैं ये आप easily अपने self concept को देख सकते हैं कि Johari window में which quadrant is there for you. You can enlarge the quadrant according to the feedback, according to the criticism. You can maintain the cordial relationship when you see Johari window, when you interact with people. It also helps to improve your communication. It helps in team development. It helps in personal development, and somewhere it is very useful in group dynamics. So, the Johari window is a concept which somewhere tries to evaluate all the 4 areas of a particular personality. You can change your personality when you work on a particular quadrant. So, today students, we have dealt about the interpersonal skills in detail. We have also seen the examples of interpersonal skills. We have also focused on the ways how to develop or how to enhance your interpersonal skills if you lack somewhere. You have also seen about the Johari window with 4 quadrants with 4 windows, and you can work on the 4 windows with relation to yourself and with relation to others, and probably you can improve your interpersonal skills when you work in group or in group dynamics. So, thank you students. This was for the day and have a nice day.